شوق کے ساتھ راشد حسن حاضر ہے اور سلام عرض کرتا ہے. کیسا رہا آپ کا گزشتہ ہفتہ؟ اور آپ نے ہمارا پروگرام پہلا واچ کیا ہوگا. آج اسی کی کنٹینیوٹی میں ہم بات کو آگے بڑھائیں گے اور ابھی ہمارا انٹروڈکشن تھوڑا سا 1-2 پروگراموں میں چلے گا. اس کے بعد ذرا پروگرام جیسے جیسے آگے بڑھے گا ہم چاہتے ہیں کہ اس میں زیادہ لوگوں کی پارٹیسپیشن ہو, شرکت ہو, ہمارا یوتھ اس میں شامل ہو, ہمارے وہ لوگ جو یہاں پر موجود ہیں, یہاں آئے اپنے ملک کو چھوڑ کر اپنے ایکسپیرینسز شیئر کریں ہمارے ساتھ. اس کا بھی ہم آپ کو آج طریقہ بتائیں گے. آپ کا فون نمبر, اپنا ای میل ایڈریس دیں گے, آپ کوئی کلپ ریکارڈ کر کے بھیجیں. اپنی کامیابیوں کا سفر, اپنی مشکلات, اپنی ناکامیاں شیئر کریں. دیکھیے, جب انسان دنیا میں کوئی بھی کام کرتا ہے, مجھے یاد ہے عمران خان کا میں نے ایک انٹرویو سنا, وہ کہہ رہے تھے کہ ایک وقت ایسا آیا کہ میری پارٹی میں صرف 10 لوگ رہ گئے, لیکن وہ ایک باہمیت انسان ہے, یہی ان کی ایک خوبی ہے. آج ان کی پارٹی ایک پاکستان کی بڑی پارٹیوں میں سے ایک ہے, لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور کنٹینیو انہوں نے کیا. اسی طرح دوسرا نام میرے ذہن میں ملک ریاض کا آتا ہے. میں نے ان کا ایک انٹرویو سنا, اس میں انہوں نے بتایا کہ کس طرح کتنی مشکل حالات میں انہوں نے اپنے کام کا آغاز کیا اور آج ماشاءاللہ ایک کامیاب بزنس مین ہیں, ریئلٹر ہیں. تو یہ مشکلات انسان کی زندگی میں آتی ہیں اور اس وقت زیادہ ہو جاتی ہیں. دیکھیے, میں نے 16 سال میں نے تعلیم حاصل کی, سول انجینئرنگ کی ڈگری لی, 16 سال میں نے جاب کی. جب میں یہاں لینڈ کیا میں نے, تو وہ 32 سال زیرو ہو گئے. اب ظاہر ہے جب 32 سال آدھی زندگی آپ کی زیرو ہو گئی اور آپ ایک فریش سٹارٹ کر رہے ہیں, تو دنیا کو ریڈ کارپٹ لے بچھا کے تو بیٹھی نہیں ہمارے لیے. اور اس کے بعد ظاہر ہے قدم بقدم ہم آگے بڑھے. شکر ہے اللہ کا, کوئی ریگریٹ نہیں مجھے. میں نے جو اسٹرگل کی, میں اپنے مستقبل کے لیے, اپنی آئندہ جنریشن کے لیے, مجھے آج اس پر فخر ہے. تو یہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں. اور کوئی بھی چیز آپ یوتھ کو خاص طور پہ میں نوجوانوں سے کہوں گا, کوئی آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے, آپ کچھ لکھتے ہیں, کچھ آپ شاعری کرتے ہیں, کچھ آپ نے ریسرچ کی, کوئی آپ نے پیپر لکھا, یا وہ کوئی اچیومنٹ آپ نے کی, کوئی آپ کے اندر آپ اسے بیان کرنا چاہتے ہیں, تو یہ پلیٹ فارم آپ کے لیے حاضر ہے. آپ ہم سے رابطہ کریں, انشاءاللہ ہم آپ کو اپنے پروگرام میں انوائٹ کریں گے اور آپ کو اس میں آپ کو ہم جگہ دیں گے. تو ہم آج اپنا پروگرام شروع کرتے ہیں. مہمانوں سے میں آپ کا تعارف کرا دوں. میرے ساتھ موجود ہیں میری کو ہوسٹ کیسی چوہان. جیسا کہ ہم نے پچھلی دفعہ بھی آپ کو بتایا تھا, ایجوکیشن سے ان کا تعلق ہے اور مزید بات چیت ہم آگے چل کے ان سے کریں گے. خورشید عالم چشتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم خورشید صاحب, کیسے ہیں؟ بڑی خوشی ہوئی آپ ہمارے ساتھ تشریف, بڑے شارٹ نوٹس پہ کل میں نے آپ کو کال کیا اور آپ تشریف لائے. خورشید صاحب الیکٹریکل انجینئر ہیں پاکستان سے, یو ای ٹی سے, بلکہ ماسٹرز انہوں نے وہیں سے کیا تھا. یہاں آ کر ماشاء اللہ ہی از ڈوئنگ ویل. آگے ان سے بات کریں گے. اور ہمارے ساتھ ردا بھی ہیں, لاسٹ پروگرام میں بھی تھیں. ہیومن ریسورس سے ان کا تعلق ہے اور ان کے ساتھ مجھے بہت ساری شکایات ہیں جو میں ابھی ان سے بیان کروں گا. ہمارا ان سے واسطہ پڑتا رہتا ہے کیونکہ ہر 2-4 سال بعد جاب بدلنی پڑتی ہے. تو بات کا آغاز کرتے ہیں کیسی چوہان سے. کیسی, لاسٹ ٹائم ہم آپ سے بات کر رہے تھے کہ دیکھیے کلچرل شاک ہمارے پروگرام کا نام ہے اور لوگ آتے ہیں, سب سے پہلی جو ان کی پرابلم ہی یہی ہوتی ہے, یہیں سے بات شروع ہوتی ہے کہ ایجوکیشن جو ہے, ہمارے جو ڈگریز ہیں اس کو اپ گریڈ کرنا پڑتا ہے. اس کے لیے ہمیں یہاں پر ایگزام پاس کرنے پڑتے ہیں اور بہت بڑی تعداد جو ہے اسی پروسیس میں یا تو انیشیٹ ہی نہیں کرتی, وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہم کر ہی نہیں سکتے, ہمارے پاس وہ نالج ہی نہیں, اپڈیٹ نہیں, ہم نے اتنا عرصہ ہم لا تعلق رہے پڑھائی سے, ہم وہ پیپر نہیں دے سکتے, ہم انٹرویو نہیں دے سکتے. وہ ایک تو یہ مسئلہ ہے. اچھا, اس میں پھر یہ بتائیے کہ ابھی تک آپ نے جو یہاں پر آپ اس فیلڈ میں کام بھی کر رہی ہیں, تو کیا آپ سجیسٹ کرتی ہیں لوگوں کو کیا کرنا چاہیے, سب سے پہلا سٹیپ کیا ہونا چاہیے؟ Right. So, Assalamu alaikum, Canada. I would first, last program we were discussing about culture shock. Immigrants, newcomers to Canada, they go through 5 stages of culture shock. And as Rashid has mentioned, I would just like to repeat what we mentioned in our last program, the 5 stages. First stage is the euphoria, honeymoon. The first year being in Canada, you are in that honeymoon stage. It's a new country, you love everything, and you want to settle down here. Second stage, after the completion of your first year starts your frustration stage. That is what Rashid is mentioning. So you are in that frustration stage, you're annoyed. Your degrees from back home are not getting accepted. You want to get a job here, you don't know how to get a job. Canadian culture, you really don't know what the real
Canadian culture is. So we'll be discussing more on the second stage in this program, but then continuing, the third stage is your acceptance stage, and the fourth one is the settlement and the integration stage. There's a sixth stage as well, which is called reverse culture shock, which we will discuss in some other of our programs. But right now, as what Rashid has mentioned, is that as soon as you land in here, and let's give an example here. You are in a skilled class, you landed as a doctor in Canada, or you landed as a dentist, or a pharmacist, or a physiotherapist, or a professor, or an engineer, like we have a guest today in Canada, and you are very much confident. You have a master's degree, a certain type of experience from back home, and you're definitely gonna land a job in Canada. But the reality is, once you start, and after the euphoria stage, you find out you're not able to get a job in your profession. Now there is where the first obstacle comes into everybody's life, and that is the language barrier. Language. Language, specifically here, I mean, is your English. Now, is that the English what you already know and you've attained your degree in? Or is it a different English altogether, which is called Canadian English, which consists of different connotations, collocations, lexicals, there are coherence and cohesion features, then there is lots of what is called spoken grammar. A Canadian English is very different from British English, and is again very different from American English, and again very different from Australian English and the South Asian English, because there are different Englishes. Is any kind of English accepted here? This is what you need to really discover. So what is that Canadian English with which you will be able to land a job here? So that is the language barrier. That's what my specialty is. I've been helping all newcomers who come in here, who want to integrate. I help them excel in their English language and get their skills so that they can land a job in Canada. अच्छा, ये जो बात आप कर रही हैं, क्या जो एजुकेटेड लोग आते हैं उन्हें भी ये मुश्किल पेश आती है? Those who are like doctors, engineers, क्या लैंग्वेज बैरियर उनके लिए भी है? बिकॉज आपको यहाँ ये चीज़ समझनी है ना, एजुकेटेड आप आए हैं, ठीक है, आप एजुकेटेड हैं, बट आपकी एजुकेशन फ्रॉम बैक होम है, ठीक है. हम इसका छोटा सा यहाँ एग्जांपल देते हैं. इंजीनियर्स को हम ले लेते हैं, इंजीनियरिंग ले लें या फिर एक डॉक्टर्स ले लें. बैक होम डिजीजेस और हैं, बैकडोन अभी जो थेरेपीज़ और हैं, यहाँ के जो लोग हैं उनकी डिजीज़ और हैं. जैसे यहाँ कैंसर का रेशियो बहुत ज़्यादा है, ठीक है. अब असल चीज़ आती है क्रेडेंशियल्स की. Credentials, like you want your degrees to get, you want an equivalent of your degree here in Canada. To get that equivalence, ठीक है, आपने वो certain fee pay की, आपको पता चला कि आपकी डिग्री, आपकी master degree is equal to a bachelor degree in Canada. Is your master degree equivalent to a master degree in Canada? Yes, from some Indian universities, you know, very top-notch university, you do get an equivalency. But that's not where the thing ends. Pakistan से भी आपके पास कई ऐसी अच्छी universities की degrees होती हैं कि आपको equivalence मिल जाता है कि back home Pakistan से masters और यहाँ का masters equal है. But अब सवाल क्या आता है, obstacle क्या आता है? Equivalency मिलने के बाद क्या आपको उस degree से again job मिलेगा? अगेन वहाँ आ जाता है कैनेडियन एक्सपीरियंस, वर्क प्लेस एक्सपीरियंस. अब जब हम कैनेडियन एक्सपीरियंस की बात करते हैं, कैनेडियन एक्सपीरियंस सिर्फ ये नहीं है कि आपने किसी क्या इदारे में काम किया हुआ है कनाडा में. नो, Canadian experience is all about your background, about how to settle, about what kind of an accent you should have, about how you should be meeting. Let me give you an example here. Back home in Pakistan, you might not be shaking hands with women. But here, shaking hand is the culture. Here, according to the Canadian culture, one arm distance, you have to maintain one arm distance with anybody whom you're speaking to. So we Canadians like the personal space. But like, to give you an example, in Dubai, I come from UAE, people stand very close and they speak very closely, right? So the thing here is no, but in Canada, no ways. Canadians are mostly very courteous and polite kind of a people. So we are more friendlier than the Americans.
See, ये छोटी छोटी बातें हैं. Eye contact, दूसरी चीज़ आती है eye contact. Depending on your religion, mostly men, they wouldn't like to make an eye contact with ladies. But eye contact, if you want to enter any job field, it's a very much Canadian culture to shake hands and maintain that eye contact to show your confidence. It's like respectful too. So it's very, very respectful, and the courtesy element is there. A light hug on the shoulder, making that eye contact and shaking hands, because there's something called human rights. We've got human rights here. The man and the woman are importantly and equal. They're equal partners. They're individuals here, right? At the end, we all have to pay our own individual taxes. So even to begin to get that job and integrate into the society, the very first obstacle we have is the language. And professionally trained, this is the internationally, so the term here is internationally trained professionals. So here in Canada, there are many programs where if you were a doctor back home, if you were an engineer back home, if you were an HR back home, or if you were a banker back home, here there are certain courses. Get those courses done. There are placements. You have to do that placements, you get that exposure, you get that experience, and then landing a job becomes much more easier. But there's usually what the statistics say is a 3 to 5 years process. Yeah. In order to finally settle down, which is the third category of the culture shock, which is it's a 5 years process. You can be extremely lucky. Yes, you can be. Like nowadays is the era of IT, right? And I've seen, like I teach students from different countries who come in here. Mostly I see, like from India, we're getting vast majority of IT professionals, software engineers. They can hardly speak English, but they're earning great amount of money here. Yeah, Banks hire them from those countries to come in here because the skill set which they have and which we as Canadians lack. So yes, that's one category. अच्छा, टेक्निकल लोगों में मैं समझता हूँ कि जिस तरह आप बात कर रही हैं ना, टेक्निकल में लोगों में ये डिफरेंस है कि उन्हें अपना जो जो अपना इक्विवेलेंसी का टेस्ट देना है वो उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इफ दे नो देयर वर्क उसमें नहीं होते, कस्टमर सर्विस में नहीं होते, या उसमें IT के कुछ अगर प्रोग्राम्स हैं, जिस तरह हम कोई भी सॉफ्टवेयर, जिस तरह आजकल का हम देख रहे हैं आईफोन्स का ज़माना है, ठीक है, ऐप डेवलपर्स हैं, तो वो डिग्री अगर उन्होंने बैक होम से ली हुई है वो सेम एजुकेशन यहाँ पर भी चलती है, ठीक है. प्रोजेक्ट्स एक्चुअली इनका होता है ना फील्ड स्टडी, प्रोजेक्ट वर्क जो रिसर्च की हुई है उन्होंने, तो वो एज इट इज़ उनको यहाँ एक्सेप्ट किया जाता है और वो हाई सैलरी भी उनको मिलती है. अच्छा, लैंग्वेज बैरियर मैंने देखा है कि जो चाइनीज़ आते हैं या यूँ कह लें ईस्टर्न यूरोप से जो लोग आते हैं उनके लिए ज़्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि यहीं आके वो लर्न करते हैं इंग्लिश. लेकिन थोड़ा सा साउथ एशिया की अगर हम बात करें तो हमने चूँकि पढ़ा है इंग्लिश में शुरू से ही, तो इससे ज़्यादा हमें मुश्किल इसमें पेश आती है कि आपने किस तरह अपनी रिकग्नाइज किससे करानी है डिग्री, वो इक्विवेलेंसी का एग्ज़ाम कैसे पास करना है, वो थोड़ा सा रुकावट इसमें ये होती है. उसमें भी ये है ना कि जब वो डिप्लोमा समझो 9 मंथ का डिप्लोमा है जो साल से 2 साल तक आप करते हैं अपनी स्पेसिफिक फील्ड में. अब जब आप कॉलेज एंटर करते हैं यहाँ पर रिसर्च बेस्ड डिग्रीज होती हैं. ये बात आपकी बिल्कुल वो आपने घर में, जहाँ तक मैं जानती हूँ, बिकॉज मैंने 4 डिफरेंट कंट्रीज में टीच किया हुआ है, जिसमें से दुबई आता है, पाकिस्तान आता है, इंग्लैंड आता है, अमेरिका आता है, और कनाडा में मैं पिछले 10 साल से यहाँ एज अ प्रोफेसर टीच कर रही हूँ. तो ये जो आपने बात मेंशन की है, मैं यहाँ एक स्पेसिफिक एग्जांपल दूंगी. वहाँ रट्टा होता है, मेमोराइजिंग होता है, ये तो आप वो पढ़ते हैं, याद करते हैं, एंड में एग्जाम होता है, वो रटाया आपने उसमें लिख दिया. यहाँ पर वो चीज़ नहीं है. यहाँ के हम एग्जाम्स, मैं खुद एक प्रोफ हूँ, जब मैं असेसमेंट करती हूँ तो हमें बिल्कुल भी वो MCQs आपको अगर मिलते हैं, जब तक आपको वो सही समझ में ना आ जाए और आपने रिलेटेड रिसर्च ना की हो, आप वो उसका जवाब हमने नहीं अपने दे बच्चों को देखा है पढ़ते हुए ना, वो उनको टॉपिक दे देते हैं, उस पर वो रिसर्च करते हैं और इस तरीके से एग्जाम उनके होते हैं. कॉन्सेप्ट उनको आना चाहिए. बेसिकली हम उसी पे मेमोराइजिंग पे ज़्यादा बिलीव करते थे और उसी के ऊपर हमारे टेस्ट होते थे. तो 3 घंटे में आपने साबित करना है कि आपको थ्योरीज आती हैं, प्रूफ जो आपने करना है, आंसर जो निकालना है. हमारे साथ एक इंजीनियर और मैथ्स प्रोफेशनल भी बैठे हुए हैं. मैं इस बात पर कहूँगी कि मैं कल ही एक आर्टिकल पढ़ रही थी, उसमें ये कहा था कि कैनेडियंस दे आर वेरी पुअर इन मैथ स्किल्स.
They hardly have any, because we are using calculators. They can't even do 2 + 2, something like that, right? Because they're not बस वो- using their mind. हाँ, नहीं वो एक बात है कि जो कि नई वो आ गई टेक्नोलॉजी आ गई तो उन्होंने फिर मेमोराइज उस पर कम कर दिया बट एम्फेसिस जहाँ रिसर्च सिस्टम है वहाँ पर ना हम अपने देखिए दोनों जो सिस्टम्स डिफरेंट ऑफ एजुकेशन का ये है ना कि एक जगह पर आप ट्रेडिशनल मेथड है जहाँ पर आप रोट मेमोरी यूज़ करते हैं, यहाँ पर रिसर्च बेस्ड है। दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हाँ हैं। जी। जहाँ आप बहुत ज़्यादा रिलायबल आईटी पर कर रहे हैं, इंटरनेट पर कर रहे हैं, गूगल पर कर रहे हैं, वहाँ आप अपने ब्रेन्स कम यूज़ कर रहे हैं ना हम। ठीक You know, we are gathering different ideas and trying to take it into a thesis and make it into research. Where on the other side, you were really learning those concepts, and because you have to enter into an exam, right? तो फ़र्क है ये। तो यहाँ का आपको language barrier is quite important, as that you have to overcome the challenges of the language, so in order to become successful in Canada. बिल्कुल ठीक। जो बात अभी तक हमारी हुई उसमें ये है कि आपने इस बात पर जोर दिया कि जो आने के बाद लैंग्वेज बैरियर जो है वो पहली एक ऑब्स्टिकल ये होती है, और फिर दूसरी ये होती है कि हमने किस तरह अपने आप को यहाँ पर साबित करना है। अपने सबसे पहले तो हमने लाइसेंस लेना है, जैसे आप दूसरे लफ्ज़ में कह लें कि आप एक इंजीनियर हैं तो आपको एक इंजीनियर के लिए लाइसेंस, आप इक्विवेलेंसी का जो एग्ज़ाम पास करेंगे तो आपको मिलेगा, अदरवाइज़ फिर आप लोअर लेवल की जॉब्स ही करेंगे। तो प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम डिस्कस करेंगे खुर्शीद आलम साहब से, जो कि यहाँ पर आए और माशाल्लाह उन्होंने बड़ी अच्छी जॉब में आज भी हैं। तो एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं नाज़रीन और मज़ीद बात को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।